Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. We'll give you best interview ever. Just remove Pratik from here. फिर तो भैया फ्लॉप हो जाएगा इंटरव्यू हम सॉरी That's true. Pratik की वजह से ही सब कुछ नहीं हिट होता क्योंकि ये है. जो बोरिंग इंसान यहाँ बैठी है If I was not around you, what? There would be no fun. You'd just be like, पका मत. अंदर ही अंदर हंस रहा होता हूँ अंदर में सब मत डालना क्योंकि इसमें प्रतीक फनी नहीं है ना. हाँ। अभी जब प्रतीक फनी आएगा तभी डालना. म्यूजिक माइक दे दे. वो थोड़ा ऐसे हवे में थे कि हाँ ठीक है बड़ा I don't want to talk to you, I don't want to talk मैं to नहीं you. था हवा मैं में पजामा पहन के वैसी गया था भाई अबे हवा मतलब वो एटीट्यूड वाला ही हवा नहीं. फिर? एक्सक्यूज मी ओवर स्मार्ट आप बनते हो मैं नहीं ओवर बनती हूँ. स्मार्ट बहुत बनती है अपने आप को यार एक्सक्यूज मी हेलो Sorry. मैं बनती हूँ क्योंकि आपको पछता नहीं है कि मैं बन रही हूँ. आप तो 24/7 बनते हो ओवर ओवर स्मार्ट. बनती क्यों है तू स्मार्ट बन ले सिर्फ क्या यार तू पूरा फ्लो ही खराब कर दिया आदमी का यार Akasa, Singh and Pratik Sehajpal, who are popularly addressed as Prakasa by their fans, spoke at length to India Forums about their song Saamna, their experience of working with an ex-partner and a lot more. Pratik and Akasa, heartiest congratulations on your new song. The response has been quite amazing. How overwhelming is it for you two? What do you want to say? हम बोल दा पहले. I just want to say that I would like to thank my mom. I would like to thank the entire Sony family. I would like to thank India Forums for giving me this opportunity to answer this question, and I would like to thank the kursi that I'm sitting on. I would like to thank the coffee that I'm sipping on, and I would like to thank this mic that I'm holding right now. But genuinely, I would like to thank all the viewers who've actually supported and loved the song so much, and lots of love to you guys. Matlab, thank you so much, guys. Thank you so much. I'll give the real answer now. I think what would we like to say, it's the fact that this song it could have very easily gone not where we needed it to be, because बहुत experiments किए हैं, video बहुत अलग है. एक जो trending train है ना उससे हम हट के हमने कुछ किया है. Video तो चलो अभी we just shot it, but even this song that was conceived 2018 में, Vayu and Stav obviously magic किया उन्होंने जिन्होंने गाना बनाया. The fact that this song is also getting a lot of love, it for an artist, the artist in me who never believes in numbers and followers and fame is very important, I'm sure. But मुझे लगता था कि अच्छा ये वाला गाना रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि शायद असली ये हिट नहीं होगा शायद इसलिए. But thank you to Sony Music India for believing in a song like this, Yeah, and then ultimately- coming to the fact that they love it is huge. And then the video, which is also very different. A lot of people have told us कि story नहीं समझ में आई. I'm like, but अच्छा लगा. They're like, पर बहुत अच्छा लगा. So that's all that matters. Tell us about what went behind shooting this song, the destination, the shoot, everything. So it's shot in Kerala in LAP, and I think जो concept है, story जो है, जो shot लिए गए हैं वो बहुत ही unconventional shots हैं क्योंकि music fast चल रहा है, video slow चल रही है, and then everything is like very different from how it should be, how it should have been, how actually the things are. Usually ऐसे नहीं होता कि कोई क्या होता है कि यार आजकल बहुत ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया की फॉलोइंग देखी जाती है, होता है वो होता है सब कुछ, उसके बाद फिर गाना डाला जाता है ताकि वो सोशल मीडिया पे हिट हो, ऐसा हो वैसा हो. बट इस गाने का वो पर्सपेक्टिव कभी शुरू से रहा ही नहीं. आई थिंक द टीम जो टीम है उनका भी नहीं रहा. एंड मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं उस तरीके का इंसान ही नहीं हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि यार क्वालिटी जो है, you should be, like I've said so many times before, you should be able to emote yourself in a way that people who are watching you can also feel it, so like that. ये सिर्फ चेहरे की वजह से नहीं है या इसकी सिर्फ आवाज़ की वजह से नहीं है ये चीज़. एक इमोशन जो है उसमें, एक ट्रुथ जो है उसकी वजह से इससे होता है. या I think a lot of shout out credit. There are a lot of things behind the scenes that went on after the shoot in post production that I know if we didn't have that team, if we didn't have Good Guns and Ashwin sir, SJ, whoever's done the video would have been very different, because there were a lot of, we shot a lot, and he has packaged it, taken out the best of both of us and shown it, whether that's the location to khair, when that team came on board, I saw some of their previous work and I was like, because Alapi mein shoot thi, each location like making it look
even more beautiful than it is. It credit goes out कई to सारी the जगह team. ऐसी हैं कि अगर आप उनको रियल में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई जगह ही नहीं कुछ नहीं था, but the because way वो they did yeah, it, the way they've shown it, the way the angles, the everything that they've taken, the direction, the you know the cinematography, everything. And you know, it is one project where usually you don't, like right now when I want to thank, I can't just say director and team. It's the director Rajesh sir, who's the DOP, Karthik who edited it, SJ, Neha, who were the people of the team. Each person has killed it, and that's why you know, the product is, and Sony Music for believing in something that was experimental. Akasa, like you earlier mentioned, this song is very close to your heart and आपने ये कुछ सालों पहले ही finalize किया है. ऐसे में, why did you think Pratik was the right choice? Honestly, we first thought that we should not do this with Pratik, because we were expecting to do something which was about our actual bond, which is a very nok jhok wala cute sa gana ho, you know, cute moments vibes. This was very serious, and so there were a little bit of to and fro discussions and everything. Ki we should do another song with Pratik and everything, but I feel like the director and the team, they went through a lot of Prakasa edits. They went through a lot, and the director, and I told him, I was like, you know, I'm because I was like, I'm suggesting you, we should do, you know, I want to do a video with Pratik and everything, and obviously Sony was also very keen on doing it. But I was like, is this the right project? I leave it upon you as a creative decision. He saw all of that, and he saw, you know, this bond between us, and that's how the video was made. The story was already done, but he changed a few things where he was like, oh, I want to capture you know, the way y'all fight, or the way there's this coldness, and but suddenly there's also a warmth. Y'all take care of each other, but you'll never let each other know that I care about you. And there's the core thing is that y'all care. So that is how we decided, because it was a gamble. What people were expecting was probably a cuter song, and the fact that this came out was I think again a creative call, and we are very glad that it happened, because people actually really liked it as well, and both of us could emote. you experiment something and then it comes out good and people like that. I think that is what honesty Art means. is about. That is what art is about. That is what honesty means. And I think everyone has genuinely, like she said, has played a great role. And उनके बिना नहीं हो सकता. So yeah. Prakasa fans have been in for a treat because they have loved your chemistry ever since Big Boss. Tell us, how much did you two enjoy working together post BB? सब वैसे ही था यार, बिग बॉस के घर में जैसा था. मुझे तो लगता था कि आई थिंक या वी हैड द सेम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप. वहां पे भी ऐसी हमारी दोस्ती ऐसी रही है यार हमेशा. That's नहीं, true. क्या लगता है भाई? नहीं, I'm मुझे not. तो ऐसे लगता है We क्योंकि, the moment we are together, Yeah. I feel like it's because वो हमारा जो bond है वो ही है. So in we fact, go चाहे- back to yeah, that. in fact, चाहे मेरा निशान से बात दोस्ती हो या शमिता से हो या किससे भी हो, अगर मैं 10 दिन तक नहीं बात करूँ चलेगा, 11वें दिन फिर जब बात करूँगा तो वैसी ही बात होगी. जैसी अब एक 2-3 गालियाँ देके, हाँ निशान तबे साले क्या है ये वो जो भी है, तो इससे भी वैसे ही है कि ऐसी बात होती है, ऐसी कोई there's no formality. पहलवान Chauntan, sorry, Chauntan न्यू ही हो गया है. No, it was a great. I think there were because बहुत बड़ा gap था from when we shared that bond and to rehearsal, and the director he actually sat us down. There are a lot of things Pratik doesn't know. I'll share. He was like, तुम लोग दोनों को बात करनी है, because जो हम लोग दोनों ना थोड़ा ऐसे हवा में थे कि हाँ ठीक है, I don't want to talk to you, I don't want to talk मैं to नहीं you. था ऐसी हवा में. प्रतीक, जब फर्स्ट Sorry. टाइम हम लोग ड्रेस रिहर्सल पे मिले ना, मैं कभी ऐसी हवा में नहीं था. हवा मैं में पजामा पहन के वैसी, गया था भाई. अबे हवा मतलब वो एटीट्यूड वाला ही हवा नहीं. फिर? We both were being a little distinct with each ऐसा कुछ other. नहीं है. मैंने देखो फिनाले से ही, मैं तो फिनाले पे जब ये मिली मेरे को स्टेज पे, तब से ही मैं मैं ऐसे नॉर्मली, ड्रेस रिहर्सल के दिन की बात कर रही हूँ. तब की उसके बाद की बात है ना. Yes, but we were very formal and No, very I awkward was with not. each other. Yes, we I was were. not. We were. यार वी नहीं बोल, वी मत बोल, तू बोल. We. I was never. तो वो you I know never what? had that. All of this Ashwin sir is coming in a I bit. never You all had can that. ask them, No. because he asked me. He's like, you know, what is. You can ask him. जब हम रिहर्सल भी कर रहे थे तो ये ऑफ थी और मैं बिल्कुल ऑफ नहीं He था. could because not tell you on your face because he knew me. you So he was ask telling him, me. ask him, okay? I did. He'll I did. I'll ask him. मैं भी पूछ लूँगा. He मैं will आपको not tell फोन. you on your face. He will. He won't. Now he यार, will. कुछ भी बोल Now रहे he हैं. will. कुछ भी जबरदस्ती मुझे भी Now घसीट he रहे will. हैं. No, now हाँ. he will. चुप रह. But there was, he doesn't I want was to never agree. off. It's okay. I've always been like the way I am. मैंने कभी uncomfortable और formal के साथ feel नहीं किया. इसको लगा होगा Anyway, पता नहीं, so there were a few. We did a few. He made us rehearse in a way that
you know, there was a lot of for the director also, this was not just कि गए shoot कर लिया दोनों hello hi हो गई चलो. He actually, there were rehearsals were more of like acting workshops में करते हैं. There were Yeah. trust falls. There were conversations where we get uncomfortable with talking to each other because he saw that bond in Big Boss and he saw that y'all were, but he saw maybe it's been a while or there are some sort of barriers that they need to get over. Immature relationship देखा है हमारा, but वो mature to convert it into a mature relationship to, you know, for that mature bonding to come out. I think that is why he made us do all that in an artistic way, and that. Yeah, he made us talk to it. Like he was literally like, okay, like, you talk बचपने में and नहीं, बात वो करो. serious तरीके से बातचीत करने में कि हाँ ठीक है. So yeah. Questions and answers and And that everything. really helped. और Yeah. मुझे बहुत मजा आया इन सब चीजों में यार actually. It was I think that is why it has, when we got to the set, even though we were both of us, there were moments where we were actually not talking to, like we were, I was like, you know what, I was like, I don't want to talk to you. He was like, मुझे भी तेरे से बात नहीं करनी. But then we would, you know, be on set and Shoot everything, लड़ाई and हुई है। बहुत लड़ाइयाँ हुई. शूट के दिनों में तो लड़ाई हुई है हमारी। देखो ना आपके सामने या सो इट हेल्प्ड अस ना, बिकॉज़ हम बात नहीं करते, हमारे बीच में थोड़ा वो था कोल्डनेस, क्योंकि हमारी बहस एक्चुअली हो गई थी. सो व्हेन वी वर शूटिंग आल्सो फॉर दोस काइंड ऑफ सीन्स वेयर वी एक्चुअली वर नॉट सपोज्ड टू टॉक, सो वी वर नॉट टॉकिंग एंड इट वाज विजिबल कि वो नेचुरली आ रहा था. बट लेकिन एट द सेम टाइम जब हमको प्यार एक दूसरे की आंखों में दिखाना था तो वो भी वी कुड यू नो पुल दैट ऑफ एज वेल, इवन दो वी वर नॉट टॉकिंग उस समय, बट वो भी हमने कर लिया बिकॉज़ यू नो. बट वो प्यार वाले जो सीन्स थे उसमें वी वर टॉकिंग, वी वर प्रीटी कूल. लड़ाई वो तभी जलेबी वाले में हुई थी ना. हाँ जलेबी वाले में हो गई. Okay, so the song speaks about trying to be on cordial terms with your ex-partner after the two of them are no longer together. What's your take on exes being on cordial terms with each other after the relationship has ended? Opposite takes. नहीं, मेरे को लगता है कि they can be, but मैं कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ लाइफ में, you know, कि immediately तो नहीं हुआ कि breakup होते ही immediately cordial terms में हो गए. Immediately तो कोई नहीं हो सकता यार. so थोड़ा टाइम लगता है. I think they can be यार, ऐसा नहीं है कि I'm नहीं हो glad you सकते. changed your perspective. No, but I have never said कि वो नहीं हो सकते. No, you were literally like, तू ऐसे सोचती होगी, मैं तो नहीं सोचता यार. नहीं, खत्म हो गया तो खत्म हो मैंने क्या गया. बोला कि खत्म हो गया तो खत्म. You can't, I would not, you know, मतलब मैं उस would not want to get into the same relationship again, because अगर breakup हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीजें खराब हुई हैं, तो फिर you know to get back into the same thing in the same zone is not something very ideal for me. But we can be cordial, like we can be cordial, we can be, you know, एक वो है कि हाँ इंसानियत तो है दोनों में, तो वो सही है चीज. तो हाँ yeah. So, Have you two ever been in a similar situation and been on cordial terms with your ex-partner? यार मुझे लगता है क्योंकि मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने मुंह उठा के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को रैंडमली कभी टेक्स्ट किया पहले कॉलेज वगैरह के टाइम पे कि हाँ ठीक है यार, सब ठीक है, क्योंकि मेरे को फर्क पड़ता है भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि सब ठीक है तुम्हारी लाइफ में, ऑल गुड, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो या, एंड आई हैव बीन वेरी मच लाइक दैट ओनली, कि ऐसे ही मुंह उठा के जैसे पहले बात करता था कि हाँ भाई सब ठीक है और सब क्या सब बढ़िया एकदम, हाँ ऐसे ही. तो हाँ, बट सामने से चाहे उस तरीके से वो रिस्पॉन्स, यू नो, बिकॉज सडनली फॉर देम यू नो एकदम उस तरीके से बात करना उनको शायद कंफर्टेबल ना लगे, बट मैं तो वैसे ही हूँ. तो मैंने मुंह उठा के कई बार पूछा कि हाँ भाई सब ठीक है, ये वो जो भी है. तो हाँ, I've had to work with someone who, so definitely मैं उस situation में आई हूँ, but I think, I don't know if that was a one-off experience. उसी इंसान के साथ I had done a song called याद ना आना, सोनी के साथ ही आया था. It's so funny that I had to dub the song, and उसी song camp में that person was there, and while I was dubbing my part, that person had to come and sit because he was है जो भी है, आपको क्या लेना देना. कुछ तो डिटेल्स बता रही, लोग वो सोच के तभी भी बता चुकी हूँ, सब जिनको पता हो ना उनको पता है. मैंने आपसे पूछी डिटेल कोई. गूगल पे सर्च कर देता हाँ कर लो, कुछ नहीं लिखा है कहीं पे भी. याद ना आना. So it was याद ना आना सिर्फ गाना है यश के साथ. And I literally, that person was there and the lyrics were तुम भी कभी तो सोचते ज़रूर होगे मेरे बारे में, whatever. So it helped me because I could, you know. Then there were the next day with that person who I didn't even, we both were not even looking eye to eye. We were thrown in a studio together कि आपको आज का session आप दोनों का साथ में है. So there was a cold war, but then I feel like because we both are artists, we turned it into sort of art, and we wrote a song with each other where it actually, now that I think about it, was such a beautiful experience because what we couldn't say, मैं lyrics लिख रही थी, like I can't say, वो गाना अभी तक release नहीं हुआ है, but there was like in English I was just like where did my love go wrong, and somewhere he would be like I did everything for you and yet, and I'm like don't leave and whatever, and through that, and then we had a conversation after that. So it has happened, but maybe I've had a very good experience which turned out very well, but हाँ ये ex के साथ weird होता है. Akasa, did this story of yours reflect in your song Saamna? Yeah, the song came out of Vayu and I when we were working on the song together. This was उसकी भी life में यही चल रहा था.
मेरी भी लाइफ में ये चल रहा था, where we were like यार, I told him यार, there is this is long back, different person altogether, different world, where I was like we both have this thing, why don't we just talk? And he was like हाँ यार, हार्ट ब्रेक गाना बनता है तो यही क्यों होता है हमेशा कि मुझे तू नहीं चाहिए मैं खुश हूँ. ठाकरांझा was that I don't need you, या फिर you know कि oh my god तो लुट गए. There's no mature this thing take to it, and Vayu is a genius who came up with something where इश्क तो कम नहीं है ना, तो let's just talk, you know, I can't do without you, and that's where I think that is Vayu's genius, that इतनी प्यारी पोएटिक तरीके से उसने वो थॉट बोल दिया. And जनरली सुन के अब वो बीट याद करके वो जो हर एक वर्ड में एक इंटेंसिटी है ना भाई. मैं स्टाव को एक्सप्लेन करी थी, द प्रोड्यूसर्स इजरायली, सो जो इजराइल वो हमारे साथ बैठा था, तो मैंने उसको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करी थी. आई सेड दिस बिफोर, आई लिटरली वाज उस लाइन पे जब आए, लाइक आई वाज सिंगिंग एंड आई वाज लाइक चढ़ी थोड़ी धूल, you know, there's just a bit of dust. I literally was like, okay, I'll just be back. मैं वॉशरूम में जाके रोई और वापस आई, and Vayu's like, क्या हो गया? And I was just like, क्या लिख दिया आपने यार? He's like, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है. I was like, what have you written? Actually. While explaining it, because English में उसको नहीं समझ में आ रहा था. I was just like literally अभी भी लाल लाल हो रही हूँ. Yeah, like I'm getting so some art man. Vayu, यार सबसे what बड़ी is बात ये है this guy? कि you know अभी चलो इसने जो लिखा है गाया है and all that, for me to be a part of such a song, I've always been a very like मैं म्यूजिक को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. I really love music because म्यूजिक से यार एक इंसान का अपना पूरी लाइफ बदल जाती है यार. गाने जिस तरीके के आप सुनते हो ना उससे आपकी लाइफ बदल जाती है. अगर आप ज़्यादा ही सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो बंदा डिप्रेशन में चले जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये बीट्स होती हैं, बाइनॉरल बीट्स, फ्रीक्वेंसीज, टोन्स जो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस में जाके अफेक्ट करती हैं चीज़ों को. एंड ये जो गाने ये बहुत टच करता है यार, ये गाना एक्चुअली कहीं जाके टच करता है एंड ये सबकॉन्शियस इट हिट्स यू. सो या it actually is very you know deep. Akasa, like you mentioned the other day, people recognize you for your pep and fun numbers. So was taking up this song because you wanted to break that image? Honestly, मैंने image को I've never really thought about it that much, but हाँ, मुझे जब गानों के लिए डब करने भी बुलाते हैं तो वो अभी भी लोग नागिन, एथिया, खींच मेरी फोटो ज़्यादा जानते हैं. Lot of people don't know दिल ना जानिया, they don't know ढूंढती फिरा. I feel like as a person, जो अब बिग बॉस के बाद लोगों को रियलाइज हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज क्रिएट करके रखी थी ठगरांझा वाली, ये बैडएस लड़की है ये, तो ये अब उनको पता चला ये तो फुल सेंटी, मतलब हार्ट आशिक इंसान. I want to sing more such songs because I feel like I'm the truest artist when I'm singing them. When I'm singing ढूंढती फिरा, मैं अंदर से मुझे वो रूह मेरी टच करती है कि थैंक यू आपने मुझे ये दिया. So it's not an image I'm trying to break, but I hope that people are messaging me. They are like, she's the same girl who sang Nagin, or oh, is this the same girl who did Ethia? And I'm like, finally people are seeing that okay, there's this side, and hopefully directors will call me to sing more sad songs. मेरी खुद की टीम को मैं बोलती थी like please मेरा सेंटी गाना निकाल दो, and they were like. Prakasa fans have always wanted to see you together both on and off screen. On screen तो देख लिया है, off screen पर क्यों ना खुद प्रकाशा ही comment करें? केमिस्ट्री वही है हम लोग यार, जो थी घर के अंदर, मतलब केमिस्ट्री की अगर मैं वो रियल ही है भाई. वो बिग बॉस में जो हम थे वो रियल ही है, ऐसे ही हैं. झगड़े होते तो होते हैं, इरिटेट करती है तो करती है ये मेरे को. एंड दैट इज इट्स लाइक दैट यू नो दिस इज द ऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ हर एंड शी इज मैड लाइक दैट. यार मैं क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, मेरी क्या गलती? पहले माइक मेरी क्या गलती? कुछ नहीं होता. उनको आवाज उनको समझ में आ रहा है भाई साहब जो पीछे खड़े हैं उनको भी, और इनको भी समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ. मेरे दिल से ये बात निकल रही है कि मैं क्या करूँ भाई. ये सच्चाई यही है कि इसने जो है मेरा दिमाग बहुत खराब किया. What do I retaliate to? क्या ही बोलूं, मतलब everyone could. It's so annoying. I think no. क्या बोलूं? If you're talking about chemistry and everything, that chemistry intensity in the video is us pissing the hell out of each other. Like Pratik and I, sometimes we get so frustrated with each other. मुझे दिखता है कि मार देंगे हम एक दूसरे को. Literally the director after a while, excuse me, over smart आप बनते हो, मैं नहीं बनती हूँ. Over smart बहुत बनती है अपने आप को यार. Excuse me, hello, मैं बनती हूँ क्योंकि आपको पछता नहीं है कि मैं बन रही हूँ. आप तो 24/7 बनते हो over smart. बनती क्यों है? तू smart बन ले सिर्फ. मैं smart हूँ, मुझे over, आपको over लग रहा है. smart बनोगे तो ठीक है, बंदा सामने लगेगा कि चलो ठीक है smart बात है. लेकिन अगर आप over smart बनोगे तो क्या बोलेगी यार, वाह यार बड़ा over smart है तू यार, हैं? इतनी फेक उनकी हंसी आई क्योंकि उनको जोक नहीं समझ में आया. क्या था जोक आपका? It was very funny. Pratik is very funny. He's so funny. It's not even funny.
Now that the two of you have been a part of BB and a couple of music videos, do you think music composers cash in on the popularity of BB contestants post the show? What's your take on this? बता भाई, ये है भाई म्यूजिशियन, बता ठीक है तेरा जवाब तो आप ही दोगे. म्यूजिक वीडियो किंग. He's like the undisputed like favorite. नहीं ऐसा यार, देखो बस मेरे को इतना है टचवुड यार, बस मैं किसी भी तरीके नहीं होता. जो भी है यार, यार क्या है यार, तू पूरा फ्लो ही खराब कर दिया आदमी का यार. अच्छा खासा मैं इमोशनल कोई बात बोलने वाला था, तो मैं सिर्फ इतना ही, मैं इतना बोलूंगा कि सिर्फ यार देखो, मेरे को सिर्फ ये है कि काम करना है. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना यार, मैं सिर्फ मूवीज करूंगा, मैंने सिर्फ अब यही करना है, अब मैंने सिर्फ हॉलीवुड जाना है, ऐसा कुछ नहीं है. माई ideology is only about performance. If I am getting a chance to perform somewhere in any sort of piece of art, I am gonna do it, and I'm gonna give it my all, and I would be really glad if people like it, and even if they don't like it, I think I would be really glad if I am able to give it my all. और मैं अगर खुद की परफॉर्मेंस से satisfied हूँ, I think that's what the best part is. उसके ऊपर बोनस ये है कि लोगों को अगर मैं पसंद आता हूँ तो वो तो और ही ज़्यादा बोनस है, और फिर तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सबका यार. I think हाँ ये this is a norm and the मुझे भी शुरू में ये बोलना था कि the reason I also did them is not just the pop. I shared a personal relationship with Karan. I shared a personal relationship with Pratik, and अगर दोनों में से कोई fit नहीं होते वीडियो में, तो I don't think we would have, because Sony Music is not someone that have done this Big Boss के बाद उनको लेके definitely करना है. It was not, nor have I ever, इससे पहले मैंने किसी Big Boss contestant के साथ नहीं काम किया है. So it's because I was there and I had a bond between them. Having said that, definitely in the market, they do that. More than cashing out, it's the right time, because people already connect to them, and then getting them in the music video will increase the reach, and there's nothing wrong with that. I think there's nothing wrong with doing music videos, nor is there और यार जो anything लोग wrong बिग with... बॉस से बाहर आ रहे हैं उनको भी तो काम करना ही है ना यार, उनको भी काम करना है, तो उनको भी see everyone wants to work hard, everyone needs work. ऐसा नहीं है कि कोई बंदा बिग बॉस से बाहर है, वो पॉपुलर हो गया तो उसकी भी गलती है. सिर्फ बिग बॉस के बारे में नहीं बोला जा सकता. काफी आजकल टेलीविजन शो जो सबसे हिट है उसके हीरो के साथ भी म्यूजिक वीडियोस की जाती है. So it's we are living in a life where it's a cycle, so everyone wants to work and everyone has to work with everyone. Yeah, that is a separate thing, but I'm as a bitter artist, if I speak about it, we are living in a world where trending, numbers, followers is more important, and you can't do anything about it. And that is why जो क्या बोल रहे थे, जो I forgot that line, but that is what is happening, and maybe one day it will not be as important, because a lot of artists do have that complaint. There are a lot of times where even I'm like, but why can't it just be pure music or just art? I'm not talking about my music videos, but a lot of times even while making songs. So, but having said that, दस्तूर है दुनिया का आजकल जो है, and we musicians also definitely, जितना प्रतीक फैम ने इस गाने को प्यार दिया है, and we all at Sony are very grateful, having said everything. So definitely it's a balance of both the artist and the musician. देखो जो देखने वाले हैं उनके बिना म्यूजिक वीडियो चलेगी नहीं, और म्यूजिक वीडियो बनेगी कैसे अगर कंपोजर नहीं होगा. कंपोजर भी होगा, अगर सिंगर नहीं होगा तो बनेगी नहीं, आर्टिस्ट नहीं होगा तो बनेगी नहीं, एक्टर नहीं होगा तो नहीं बनेगी. सो एवरीवन हैज टू बी देयर, चाहे ये लाइट से लेके, कैमरा से लेके, इंस्ट्रूमेंट से लेके, सब कुछ होना चाहिए टू क्रिएट द परफेक्ट थिंग. So yeah. Every BB fan will know and agree that Pratik is a ladies' man. Nikki has also very openly expressed her liking towards you. How do you see it? बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे यार. इतना प्यार मिलता है इसलिए मैं मारती हूँ. बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि यार लड़कों का प्यार तो बहुत है, बहुत भाई है मेरे, बट और बहनें मुझे चाहिए नहीं. तो बहन मेरी एक दो हैं जो सगी बहनें, जो खून की रिश्ते से जुड़ी हुई बहनें, कजन्स और सगी जो बहनें हैं. उसके अलावा बाकी सारी लड़कियों के लिए मेरे दिल से बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार. सिर्फ आई एम ओनली योर्स एंड आई एम हैप्पी टू बी योर्स. Apart from the music videos, what is in store for all your fans, Pratik and Akasa? बहुत कुछ है अभी. एक्चुअली बहुत चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक्साइटिंग है. आप लोग तो बहुत एक्साइट हो गए, पता नहीं मैं एक्साइट कितना होऊंगा उसको करते हुए, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है. एंड या अभी मैं बोलूँगा नहीं सब कुछ, बट आप लोग इंतजार कीजिए, एंड इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन गाइस. अभी तो शुरुआत है यार, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और सफल हो रहे हैं. शुक्रिया. There's a lot coming for sure. If I'm talking about, मैं तो सिंगर ही हूँ, तो म्यूजिक वीडियोस तो आएंगे ही मेरे. There are a couple of songs. There's one with Astha and Vayu. I'm excited to come back with my Nagin peeps again. And गाने हैं 2-3
there are some interesting cliche ho gaya na. There is something very different, a couple of different things that are happening, and I'm excited to that for that as well. Especially after Saamna, I got a few calls with, oh, acha, aap aise ye bhi karte hain, to fir why not we do this? So I'm very very excited, and I have a couple of new things I've signed up with recently, and I'm excited to work with them too. Lastly, what is that one thing that you'd like to say to everyone pouring in so much love on you? बस हाथ जोड़ के इतना बोलूँगा, हाथ जोड़ के कि थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए. आई थिंक आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, उससे हमको और इंस्पिरेशन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है टू वर्क इवन हार्डर इन लाइफ. बिकॉज एक वो है कि हमें आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है. एंड आई थिंक यू नो परफॉर्मेंस तो है ही अपनी जगह, वो तो ऑब्वियसली अपने से एक एक्सपेक्टेशन है ही, बट एक ये भी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करना है. बिकॉज यू गाइस आर वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू सपोर्ट अस, टू गिव अस so much of love, you know. And thank you so much, yaar. Thank you so much. Hi guys, this is Akasa, Hi guys, this is Pratik Sehajpal. and you're watching us on India Forums. Forums. Yes.